तू चापे जा चाप 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 चापे जा देवांशु चापे जा जा এখানে তুই মাসুদ চাপে যা সামনে চলে আয় हाँ मैं तो सीधा खा देखा था बेटा एकदम नीचे देखा सर देखो কি দেখবো বল देखो দেখতেছি হ্যাঁ what what the Miss class अरे foreigner Every classroom search कर रही है देखो ना सर फॉरेनर है सर তিনটা ভিডিওস वो टीचर छोटा बच्चा ডান্স টিচার फॉरेनर कल के कुछ এগুলো কি আপলোড করে নেকেড স্টোরিজ এই দেখ नहीं नेक्स्ट स्टोरीज এই যে মিস সার্ভিস ক্লাসরুম Maybe unedited বলে ওটা বলতে চাইছো uncensored ও তোমার চ্যানেল সার্চ করো এটা চলে আসবে সেন্সর মিস কর কর চ্যাটিং কর করিস হ্যাঁ কর বোর হচ্ছিস ও বার করে নিছিস তো তুই আবার सब लोग डुबा दे। एवरी क्लासरूम में एकदम सेम टू सेम কারণ লিখাবো সেই জন্য हाँ वही तो सर সবাই তোমার ওয়াইফ ভাববে মিস মিস আছে তো বোধহয় Good morning, sir. Saurabh Banerjee. Good morning, sir. Aditya Roy. Good morning, sir. Good morning, Aditya. Good morning, everyone. So today we will learn the detailed concept of acids, bases, and etc. I know you can't see me, but you can see my students and you can hear my voice. Please tell me if you can hear my voice or not. Okay, so you see, in the last part, okay, thank you. In the last part of the last video, just keep on listening. Oh, I would suggest all the online and the offline students to open up their copies. I will request all the online and the offline students to open up their copies. I will do some, I'll speak something very interesting. I mean, and you will represent them in the, sir, but দেখবো কি করে দেখবি না শুনবি শুধু আজকে তো একটু নতুন করে হোক এটা অন্যরকম একটু নতুন ওকে আর এটা অন্যরকম একটু নতুন হোক ওকে আচ্ছা there are two concepts of acid and bases. Okay, so you just write down concept of acids and bases and make two divisions of it. There are two concepts of acids and bases. Just write down two concepts and make division of it. Done? Number one concept is operational concept or operational definition.
operational concept or operational definition. Sir, ki left rote. Sorry, please write down there are two definitions of acids and bases, not concepts. Two definitions of acids and bases. Two definitions of acids and bases. The two definitions are: number one, operational definition, and number two, conceptual definition. And number two, conceptual definition, operational definition and conceptual definition. CONCEPTUAL. Done. Now please listen. Though I told that there are two definitions, operational definition and conceptual definition. Out of operational definition, whatever I will say, you will tell, sir, we have learned in class 10. Now you understood what I mean? Turn blue litmus red, red litmus blue. Then react with active metals to give out hydrogen. Okay, bases do not react with metals except for some, right? Some bases like NaOH reacts with zinc, NaOH reacts with aluminium. These all things in class 10 you have learned. Wait, I have to come in the frame. Hold on. Anyway, red litmus blue conducts electricity in their aqueous solution. These all things you have learned, no? Weak acids conduct less electricity, strong acids conduct more electricity, weak bases conduct less electricity, strong bases conduct more electricity. Tick. Okay. Acids are sour in taste, bases are bitter in taste, bases are soapy in nature, strong acids are corrosive in nature. Okay, there is neutralization reaction between acid and the base and formation of salt and water. These all concept of acid and base is operational definition. This is not conceptual definition. Conceptual definition were put forward by three scientists. Okay, one is Arrhenius, second is Bronsted and Lewis. Oh. Arrhenius, Bronsted, Lowry and Lewis. Arrhenius, Bronsted, Lewis. तीन साइंटिस्ट्स ने, ब्रॉन्स्टेड अकेला नहीं था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी. Okay, Arrhenius, Bronsted, Lowry and Lewis. Three concepts are there, which were discussed in the last part of the video of the last class, right? And I there told that today I am just giving you the concept and next day I will do the detailing of it. So you see, first I will begin with Arrhenius concept. So please give heading Arrhenius concept. Arrhenius. Please give heading Arrhenius concept. Arrhenius. Arrhenius concept. Just give heading Arrhenius concept. Arrhenius. Arrhenius concept is what you know. Again, an acid releases H plus ion and a base releases OH minus ion. As simple as that. H2SO4 is acid because it releases H plus and SO4 minus ion. SO4 minus 2. Right? HCl is an acid because it releases H plus and Cl minus. NaOH is a base because it releases Na plus and OH minus. So KOH is a base because it releases K plus and OH minus. This is the concept of Arrhenius acids. Hold on for a second. Give me a copy.
So first there is Arrhenius concept. Now when we talk about Arrhenius concept, it's that HCl releases H plus ion and Cl minus ion, and NaOH kind of compounds releases Na plus ion and OH minus ion. So the one which releases OH minus ion is regarded as a base, and the one which releases H plus ion is regarded as an acid. Fine, we understand that. But who is a strong acid, who is a strong base, who is a strong weak acid, who is a weak base? The fact is this: suppose we know from our knowledge that CH3COOH is a weak acid. Why? Because, and we will write down in the reversible form also, because they dissociate, associate back. They dissociate into CH3COO minus plus H plus, and they associate back into CH3COOH2. Now, but this is one indication that it is weak, otherwise it wouldn't have been reversible. But the fact is this, and another weak acid, if you ask me to write down H2CO3 will give H plus 2H plus CO3 minus 2. That is also the thing. If you talk about a weak base, NH4OH is a weak base which will give NH4 plus OH minus. Okay, NH4 plus OH minus. So these are the strong acid, this is a weak base, right? So ALOH whole 3 is a weak base, ALOH whole 3 is a weak base, Al plus 3 OH minus 1. It is also a weak base. Okay, now the fact is this: what is the difference? The first difference is that alpha, that is the degree of dissociation. Now if I talk about the degree of dissociation, okay, in degree of dissociation, what happens is that the alpha is high for strong acids and strong bases, okay, and the alpha is low for weak acids and weak bases, and alpha is so low for weak acids and weak bases that it is less than 1, means ignored when compared to 1. Okay, so that is one of the understanding factor, that yes, this is a weak acid or a weak base, releases so less amounts of ions. Now that is the one thing. Now, but there is one limitation of this Arrhenius concept, is that Arrhenius is saying that fine, you will find H plus ion in the solution, and hence you will regard them as an acid if you find them H plus ion. But actually you will never find H plus ion. You will find H3O plus. This was previously also explained, that when in water itself has HOH. Here lone pair of electrons are there in the water. These lone pair of electrons will be donated to the H plus, and hence, as because oxygen is donating the lone pair of electron, oxygen will become electron deficient, and hence HOH if we take and it bonds with H, this O will become positively charged. Right or wrong? This O will become what? Positively charged. So this is H3O plus. Now with this H3O plus, if another H2O adds up, then it will become, I think, H5O2 plus. If it with another H2O adds up, it will become, I think, H7O3 plus. If another H2O is added, it will become H9O4 plus. Now you will be telling, sir, we understand that H plus ion has come out, so H3O plus ion with the water has formed. We understand that. Why are you continuously adding up water? Because all the water molecules are surrounding and they are trying to create hydrogen bond. I will show you a picture which make things clear to you. See, H5O2 minus ka structure. What had happened is H3O plus has first formed. It is H5O2 plus. H5O2 plus. See here now, which H3O plus I have added H2O. What do you get? H5O2 plus. Just addition. 3, 2, 5, OO2. 1, 1, 2. So what is happening is this H is there. Now another H3O plus is there. H, and here is the H. Okay, let this be positively charged. Now what will happen is that
as because still a lone pair, this is positive, still a lone pair of electron is there, okay, they will try to create hydrogen bonding. Because here also a lone pair of electron is there, and oxygen still remains electronegative and pulls the bonded pair of electron. And hence, what happens? Hydrogen bonding complex structure creation occurs. See here, it is formation of H9O4 plus. Can you see? So just addition of water. One is what actually is happening. Sorry, here it is not plus. Sorry. Here it is H2O only, because what I have written H3O plus plus H2O. H3O plus H2O. So one will be H3O plus, another will be one will be H3O plus and another this H3O plus ka H, another will be H2O. This one is H2O. Isn't it H2O? Yes, sir. So this H3O plus ka H, this H is not required, and this O will create bonding. See, this is H3O plus. Up to here it is H3O plus. See here. Up to here what it is? H. This is H3O plus and this is one H2O. They bond up. See, do hydrogen bonding. Same way, 3H3O plus, see, one H3O plus is there here, one H3O plus is there, other all H2Os are there. They create hydrogen bonding among themselves and H9O4 plus. So what I have explained here, that H3O plus plus H2O gives H5O2 plus, and with that you add one H2, you will get H7O3, one H2O. So 1, 2, 3 H2O if you add with H3O plus, then you get H9O4 plus. Right or wrong? So here you can notice that there is one H3O plus and 3 H2Os, and they create hydrogen bonding among themselves. And hence these complex structures or hydrated ions form. These are known as hydrated ions. Hydrated ions form. So this is actually a limitation of the definition itself. The definition itself says that there will be release of H plus ions. But where do we find H plus ions here? We don't find H plus ions. We actually find H3O plus ions, H5O2 plus H5O2 plus ions, H9O4 plus ions. And that reason we find them is hydrogen bonding between the water molecules. The reason we find them is hydrogen bonding between the water molecules. Understood? Now, sir, if it is so, then what about the OH minus thing? Sir, So that means they can form unlimited bonds and pairs. They can form unlimited bonds and pairs, yes. Add more H2Os. H9O4 plus, another H2O add, H11O5 plus. It will continue. Like H100. It will keep on continuing. রেশিওটা কি হবে তাহলে H100 রেশিও কি হবে মানে H101 হবে আই গেস হ্যাঁ ইভেন হবে না এটা H100 হয়ে গেলে কিছু একটা আসবে এখানে এটা কত রেশিওতে আছে 3:1 রেশিওতে আছে সেই হিসাবে হবে কিন্তু ব্রেকও তো হচ্ছে দেখ ওইভাবে হয় না একটা H3O প্লাসের বাকিগুলো তো H2O অ্যাড হচ্ছে H3O তো আর অ্যাড হচ্ছে না তাই জন্য ওইভাবে রেশিও ক্যালকুলেট করার লাভ নাই আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট দুটো আলাদা রিয়াকশন তো একটা রিয়াকশনের মতো ট্রিট করে স্টোচিওমেট্রিক ক্যালকুলেশন করা যেতে পারে কিন্তু দরকার নেই তো এটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি বা এইবার তুই যে বললি একটা কথা যে H100O4 প্লাস ইউ আর সেইং ওয়ান থিং H100 ফর্ম হবে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো কেন কি দেখ অনেকগুলো H প্লাস আয়ন রিলিজ হচ্ছে অ্যাসিড থেকে মানে जगह जगह में H9O4 प्लस H11O5 प्लस ये डिस्पर्स होके रहेगा एकदम सब गोटा वाटर मॉलिक्यूल ऐसा फॉर्म कर देगा ऐसा नहीं है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस राइट ধর 1 মিলিয়ন H2O মলিকিউল আছে আর একটাই H প্লাস বেরোচ্ছে সবাই কি করবে নাকি কোনো জায়গায় করবে ওইটাই ঘুরতে থাকবে আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট ইজ দিস আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি আন্ডারস্টুড দেয়ার ইজ এনি প্রবলেম রিগার্ডিং হোয়াট এভার আই হ্যাভ সেড there shouldn't be any problem regarding whatever I said so I hope that you have understood what is Arrhenius concept of acid and what is the limitation of Arrhenius concept of acid. The definition itself becomes a limitation. There are more limitations that I will discuss. Then again you may argue with me that sir if it is so that if there is an acid suppose there is a HCl H plus Cl minus नहीं लिख के I should write down H3O plus Cl minus. Fine, this H3O plus with more water molecules adding up and adding up, it will give
it will give continuously, conjugated structure or continuously, hydrated ions. Then what about OH minus? Yes, obviously OH minus will also do. OH minus will also do. H2O plus OH minus will just add up. You will, I think, get H3O2 H3O2 minus. Obviously, sir, why? Because H2O molecule is again there, and suppose OH minus is there, right or wrong? This hydrogen is the OH minus is there. Okay, now the fact is this, that here are lone pair of electrons 1 2 3 4 5 6 more lone pair of electrons. Generally O তে কটা থাকে? দুটা lone pair of electron থাকে, right or wrong? এরকম দুটা lone pair of electron থাকে, ধর এটা H+ হয়ে বেরিয়ে গেছে, this has gone out as H+, তাহলে এই bonded pair of electron has given to the oxygen and went, yes or no? So don't you think 1 2 3 4 5 6 is more a lone pair of electrons, so the oxygen will become negatively charged. So the oxygen here is negatively charged. Now the oxygen here is negatively charged, but these are slightly positively charged. This is slightly negatively charged. So don't you think that there will be pairing up between them? So hence H2 and OH minus will form H3O2 minus. Another H2O will come. Then it will be H5O3 minus. এরকম ফর্ম হতেই থাকবে। So neither the release of H plus and nor the release of OH minus remains as individual ions in the solution according to the Arrhenius concept. Arrhenius says that yes, H plus ions and OH minus ions by the acids and by the bases respectively will be released. Released, but they will not stay in the solution as that entity, as H plus ion or as OH minus ion. They will stay as, hydrated ions. Understood? So then why don't we write OH minus ion as that H3O2 minus? We can write. So but more commonly we don't write. We don't write more commonly because, whenever we do calculations of Ka or Kb, we don't require them to write. ওরকম H3O plus না লিখলেও তো চলে। H3O plus এই যে লেখে, এত পপুলারলি লেখে, জাস্ট এটা কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য। কি ইম্পর্টেন্স আছে? একটাই ইম্পর্টেন্স আছে যে আরএনএস কনসেপ্টটা আসলে যে ভুল, অ্যাকচুয়ালি দ্য আরএনএস কনসেপ্ট ইজ নট ভুল, বাট ইনকমপ্লিট ডেফিনেশন, এটা বোঝানোর জন্যই লেখে। ক্লিয়ার করতে পারছি? হ্যাভ আই বিং এবল টু মেক মাই সেলফ ক্লিয়ার? এই ইন্টারনেটওয়ালা পিপল, দোজ হু আর সিইং, প্লিজ কমেন্ট অ্যান্ড টেল দ্যাট হোয়াট এভার আই হ্যাভ টট রাইট নাও, ইজ ইট ক্লিয়ার ইন ইয়োর মাইন্ড? এই কমেন্ট। আদিত্য রয়, কেউ দেখতেছে না। 5 জন দেখতেছে। আন্ডারস্টুড স্যার, একটু কমেন্ট করার পর আসে পড়ে। Yes, sir. Okay, fine. If you have understood and if you are saying in the comment section that you have understood, it's good. Okay. Now, moving more forward with the understanding of this, you see, what are the limitations and all? Limitation is, don't you think SO3 is acidic? Where is H plus ion? Does it release H plus ion? Don't you think CO2 is acidic? Does it release H plus ion? Don't you think NH3 is basic? Don't you think Na2CO3 is basic? Don't you think CaO is basic? Where is their H plus ion? They don't release H plus ion. So Arrhenius doesn't cover all the molecule ka definition. Does he cover all the molecule ka definition? No, he doesn't cover all the molecule ka definition. So that is the first and foremost limitation. Right? So that is the thing. And first limitation to bujli, second limitation also you understood, and yeah, that is the thing. However, a limitation can be overcome also by one trick. Can you tell me the trick? Tell. Sir, when a strong acid, when an acid and a base react, they form these salts. So No, it can be overcome by dissolving in water. Sorry. And do you know that dissolving in water is a reversible process? This is reversible according to gas pressure.
we will calculate not Kc but Kp of this. Do you understand that? Don't you think SO3 is gas? Yeah. And it will depend only on the concentration of SO3. Why you tell? Because this is only the gas, these two will be in liquid. We will take them one. এগুলা বলতে পারলে then that person is understanding the chapter. Good. Clear? One choke, don't show me one choke. বুঝিতে পারছি? Am I being able to make myself clear? So these can be overcome by dissolving them in ওয়াটার, তখন ও অ্যাসিডের মতো বিহেভ করা শুরু করে। বাট ফাইন, এদেরকে তো আর ডিফাইন করতে পারে নাই, इन लोगों को तो डिफाइन नहीं कर सका ना, कर सका नहीं कर सका, so that is a limitation. However, inability to explain the reaction, certain reactions like देखो Arrhenius ना खाली limitation बोलतेছি, একটু ইউটিলিটিও বলি। Arrhenius could explain neutralization. This is utility. This is positive part of his. কারণ কি he knew that NaOH and HCl is reacting to give Na plus and OH minus. Oh, sorry. NaCl plus H2O. Now he knew why this is occurring, because Na plus and OH minus is released and H plus and Cl minus is released. These OH minus and H plus are together making up H2O. This is the reason why this reaction is called neutralization reaction. You remember I told you in class 10 that in your school they will tell acid reacts with base. It is called Wait, hold on. Buffering. No, not buffering. Hold on. No. Charity. Okay, এবার আমরা ক্রিসমাসের দিন we will do something new, okay? What we will do is খালি বোম ফাটাবো। What we will do is আমি তো এখানে খাওয়াবোই, that is different thing. You bring any পুরানো জামা কাপড়, anything you have which you are supposed to throw away, okay? And little bit অল্প টাকা, if you bring 5 rupees also, 10 rupees also chalega, okay? We will collect everything and we will give it to Jishu Ashram. ওদিকেই আছে। ও এখানে হোয়াইট কালার যে Okay, I'll say tell this to all the students. ভারতীয় স্টুডেন্ট। Okay, we will go to church, we will give it to the Jishu Ashram, we will donate and we'll come back. Whatever, even if we can donate 500 rupees, if collect करके 500 rupees भी हुआ, it's still nice idea. We will do this time, okay? So মানে ওরা কি আর ডোনেট করে দেবে? না স্যার, মানে আমরা ডোনেট করব না, মানে ওদের আমি ক্লাস 10 কে বলবো, ক্লাস 11 তোরা হলি, 12 কে বলবো, সবাইকে বলবো, যত আমার স্টুডেন্ট আছে সবাই কালেক্ট করে ডোনেট করব। So we'll go to church also. We will obviously go to church. We'll click pictures there. আমি এবারে ক্যাফে নিয়ে আসবো। And I have also a lot of things to talk to Jesus about. So we need to go to church that day. Don't show me one choke, no. আরে Do rub both. both your eyes. I am so superstitious, this I couldn't control in school ka class. Isn't it? স্যার এটা করলে কি হয়? I So used what to- happened? খারাপ যায়। Again you did. Do. So what happens? ধরে দিয়ে দিবা কি? দিন খারাপ যাতা है। মার তুই করে Sir, ও স্যার তুমি বললা দেখাবে জিম করাকে এক থাপ্পড় বসাই দিবা। বসা দিব ওকে আমি এক থাপ্পড়। তোমার সাথে পাঞ্জা খেলতো? পারবো না তো। না দেখি তোর জিম করে কথা হয়েছে, না দেখি তো হোক একটা। তিন আর আমার না। live? হ্যাঁ লাইভ। আমি তো হারিয়ে যেতেও পারি। তুমি জিতবা, আমি খেলবো না। তো কি হলো, এ তো ডাম্বেল শাম্বেল উঠায়। পুরো পারে খেলবে। আয়। হ্যাঁ। আমি বোধহয় তোদের দুইজনকে একসাথে হারা যেতে পারবো, আই থিঙ্ক সো। ইয়েস। দেখি আয়। আমিও জিম করবো। So class 9 স্টার্ট করেছিলেন না? সৌরভ লিখছে আরে আমাদেরকেও দেখাও। না দেখানো তোর কাজ সৌরভ, আমরা দেখাই না, উই ডোন্ট শো। তুই দেখা, আমরা দেখে খুশি। কাজ
আর আমরা মজা নিই না সৌরভ, মজা তুই নিস, নিজেরাই মজা নিচ্ছ, মজা তুই নিস, আমরা মজা নিই না সৌরভ। তুই দেখা, অনেকে মজা পাবে দেখে। এমনি আজকাল দেখা দেখি যুগ চলতেছে। ওকে দেখা ওকে দেখা পড়াশোনা তো, টকিং অ্যাবাউট স্টাডিজ নো, ওকে ফাইন। কি হচ্ছে আদিত্য? মজা হচ্ছে, সৌরভ মজা পাচ্ছে। দেখানো হচ্ছে। না না নেগেটিভ সেন্স না, নেগেটিভ সেন্স না, পড়ার পজিটিভ পজিটিভ, সরি সরি। নেগেটিভ সেন্সে চলে গেছে। এটা আনলিস্টেড করে দিতে হবে, গিয়ে আজকে আনলিস্টেড করে দিব এটাকে। মনে করে সে যাওয়ার সময় করবে করবে, রিপ্লাই করবে। লাস্ট কে আছে তো? তানভি শানভি কে আছে? কি খাবি আর চার সাথে? এখন তো কল করলে কথা বলতে পারবি না তুই। হ্যাঁ ঠিক আছে, বিস্কিট কিসের বিস্কিট আর মুড়ি। কিসের অ্যাডভান্টেজ? বিস্কিট মুড়ি ঝুড়ি ভাজা সব। কিসের? পরিষ্কার করে বল। ঝামেলা বসছি। So that you can hit me on my face later. I won't. Say whatever you... No, I will not. Say whatever you want to say. Say no, you want to insult, insult. Okay, okay, fine, fine, fine. Now let's come back little bit. We have, so he could explain a neutralization, right? Because he said that as because OH minus ion and H plus ions are released, so they pair up to form water. So I was saying that in class 10 I told you that if they tell you in your school that a neutralization reaction is a reaction between acid and base, they will never tell you why is it called neutralization reaction. Why is it called neutralization reaction? Because the salt that is forming could be acid salt, could be a basic salt, could be a neutral salt. Still it is neutralization reaction in all the cases. You remember acid salt, basic salt and neutral salts? When two strong acid and base react, it is forming a neutral salt. Weak hollow neutral salt. Strong acid, weak base, acid salt. Acid. Strong Weak acid, strong base, basic salt. But still it is called neutralization reaction. Why? Because of the formation of water, which is a neutral compound. Because of the formation of water, which is a neutral compound. That is the reason why it is called neutralization reaction. So I hope he could explain neutralization reaction and you understood. Okay. But here only comes, this he explained though. This he explained, but he bechara could not explain NH3 plus HCl. Why is this forming NH4Cl plus in solid state? Why? He could not explain this. See, this is basic in nature, this is acidic in nature. But he couldn't say this is basic in nature. He could say that this is acidic. Fine. According to his definition, it is acidic. We understand. But he could not say it is basic. He could not say it is basic. Are you getting my point? Is this understood or not understood? So now, that's why new concept came, Bronsted. Lowry's concept. Loud concept. I'll give you one tight slap. What is there in Jalpaiguri? Okay, in Bronsted concept, they say acid ka concept remains same. Donates H plus. Donates? But base ka concept, what did you know? Receives H plus. But not receives H plus. But not what to say? Give OH minus. It receives H plus. For example, you see, let me write down a reaction. HCl plus H2O. He explained in this way. When HCl dissolved in water, it is forming H3O plus plus Cl minus. He will tell, sir, এটা তো ইয়েরই concept হয়ে গেল, Arrhenius concept এর সাথে ম্যাচ করতেছে. It is matching with Arrhenius concept. Then what is the difference? The difference is here. ক্যামেরাটা পোর্ট্রেট মোডে চলে গেছে. হ্যাঁ, পোর্ট্রেট ফোকাস করতে হবে। দাঁড়া, ঠিক করে দিচ্ছি.
গন্ডগোল তো হয়েছে। দাঁড়া ঠিক হয়ে যাবে এখনই। দেখ এবার ঠিক হয়েছে, এবার হবে। হ্যাঁ এবার ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ জানি তো ঠিক হয়েছে, বুঝে গেছি। স্ট্রিম ল্যাব হেল্প ডেল করতে শিখে গেছি এখন। ওইটা কি হলো প্রিজম লাইভটা? প্রিজম লাইটটার ভালো না, কোয়ালিটি ভালো না, কি বাজে কোয়ালিটির ভিডিও হয়। তুই আগের বছর একটা প্রেজেন্ট চুরি করছিলিস না lab থেকে? হ্যাঁ ল্যাব থেকে এই কি প্রিজম চুরি কি করছিল? शायद Show your face. You did prism churi from DPS. Show. Prism chor. Did prism churi in class 10 from DPS. Show. I'll send it to Shukanto sir. Show. wanted Tell I did prism churi. You did? 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। আমাদের ক্লাস থেকে চামচ চুরি করে আনছিল। চামচ চুরি Masroor, will you keep quiet? Masroor, you remember when you used to stay in hostel, you didn't used to bath for 3 months? নো স্যার, break thing. Once Masroor came to me at the table to talk. He was so smelly, I had to Oh, sir, Hi. fake. Not fake. Not 3 months, 3 days maximum. Oh, 3 days you didn't take. Oh. হ্যাঁ তো হোস্টেলে ঠান্ডা জল কে সকাল 6টার সময় স্নান করবে? नहीं था ऊपर की ताले ऊपर बोला तो 4 महीना वो एसी है। हां एसी है एसी एसी দিয়ে কমান্ডার পেল আরে উপরে এরকম ট্যাগ আছে। Done. Should I say? यस सर। So HCl plus H2O gives H3O plus Cl minus. ঠিক তো তুই বলবি আরে এটা ব্রনস্টেডের কনসেপ্ট কিভাবে হলো? This is Arena's concept only. No. Actually what it is that HCl here is an acid because it is releasing the H plus ion. An acid in case of Bronsted will only be an acid if samne there is a base. Sir, H2O is a base. No, but you know from the Arena's concept that these H2O will receive this H plus ion and become H3O plus, yes or no? So the one which is receiving the H plus here is H2O. According to the concept, a base receives H plus. Don't you think that H2O is acting as a base here? A Bronsted base maybe, but as a base. And this is a Bronsted acid. It becomes a Bronsted acid. Is this understood? Let me show you another reaction to make things clear to you. Suppose, for example, NH3 plus H2O. NH3 plus H2O. Do you know what will happen here? There will be NH4 plus formation plus OH minus formation. Everyone knows this. Yes or no? NH3 যখন H2 এর মধ্যে গুলানো হয় NH4OH ফর্ম হয় কি না? তো NH4OH কে ব্রেক করে লিখে দিছি। এটা সবাই জানে। There is any problem in knowing this? Everyone knows this? Yes or no? So NH is there and HOO is there. This will give the H plus ion and there is a lone pair of electron which will go and settle down here. Are you getting my point? So the N here H plus came, the lone pair settled down, what to say, coordinate bond formed, N become positive. Don't you think that this is NH4 plus now? Yes. So who is receiving the H plus ion? So don't you think it's a Bronsted base? Because the one which receives the H plus ion is a Bronsted base. Now here H2O interestingly is acting as a Bronsted acid. Yes or no? Now notice these two reactions. This reaction where H2O is acting as a Bronsted acid and notice this reaction where H2O is acting as a Bronsted. So don't you think that H2O is amphiprotic or amphoteric in nature? H2O is amphoteric in Bronsted. H2O is amphoteric
according to Bronsted Lowry concept. And understood why? Yes, sir. Understood why? So who is a Bronsted acid? Tell me. Who donates H plus ion? Who is a Bronsted base? Who? Accepts OH minus. Receives H plus. H plus. Oh, अच्छा. है? Yes. No. It has nothing Yeah. to do with OH minus. Oh, हाँ हाँ. I'll give you one tight slap, no? Face देखा लो. Whenever I teach something, you tell ulta and confuse other people. Now you will only clear the confusion. हाँ, okay, sir. Tell me, what is Bronsted acid? So it gives H minus, H plus. What is a Bronsted base? Accepts H plus. Again you said gives. So accepts. You like giving us so much, no? Why are you smiling? Did I say something wrong? हाँ. I said wrong. No, Do I say wrong? no, sir, no, sir. Tell me what is a Bronsted acid? So acids give H plus ion. Give H plus ion. And who is a Bronsted base? It accepts H plus ion. The compound which accepts H plus ion. हाँ. Here, NH3 becomes a Bronsted what? Acid, base, base. Base, so base. NH3 So becomes a... H2 becomes Bronsted acid. How? So how so? Because NH3 receives the H plus H from plus from H2O. H2O. So if H2O comes, if this bond ka electron B is here, then oxygen again becomes with an extra lone pair of electron, yes or no? So it will be OH minus. That's why OH minus is released. And NH3 4 plus is released because the H plus goes and nitrogen with its lone pair gives to the hydrogen. Right or wrong? H plus ion. Right. And what happens here? What happens here? What happens here? So HCl and H2O reacts, sir. HCl acts as Bronsted acid and Why? H2O Because it releases the H plus H ion. plus ions. Why is it so? What do you think about the characteristics of Bronsted acids and bases? Who are they? The one which releases H plus ion. Don't you think the ones which will be able to release H plus ions will actually be arenas acids only? But in case of base, our thing become ulta. The one which has lone pair of electrons can accept H plus. Others cannot accept H plus. Like NH3, Na upore there is lone pair of electron. Yes or no? Only they can accept H plus ion. So they become Bronsted bases. Is this clear to you? Is this understood? Is this absolutely understood? There is any doubt regarding this? Huh? But in Bronsted, there is one HCl plus H2O giving H3O plus plus Cl minus. NH3 plus H2O gives NH4 plus plus OH minus. H4 plus could not. সেখানে দুটো Sir, buffering. Wait, buffering will go away. সেখানে দুটো মাইনাস কেন? Poor internet connection. Wait. Hold on. Let me wait for. CO3 গুলো ইয়ে CO3 minus to একটা H plus নিচে তাহলে HCO3 minus ই তো হবে. আগে বছর পড়িয়েছিল Oh, cannot open it. अरे कुत्ते Oh, ठीक हो गया. I think it will not be buffering anymore. Oh, again it is buffering, I think. Wait, hold on. It will come back. Please come back. Come back. Come back. চলতেছে বাফারিং হচ্ছে না এখানে তো দেখাচ্ছে ও হয়েছে এখন ঠিক হয়েছে ঠিক ঠিক ওকে নাও লিসেন আমার ফাইন সৌরভ ব্যানার্জি রোড ফাইন অর্গাজম কি বলতে
টার্ন লিস্ট করেছিল। Okay. Listen. So HCl is there, H2O is there. Now you understood this reaction. Let us understand this reaction. CO3 minus 2 becomes HCO3 minus. It has accepted H plus. So what is this? This is a Bronsted base. It is a Bronsted base. And what is this? Bronsted acid. Acid. Good. And HCl has become Cl minus. NH4 has received the H plus. So it is a what? Bronsted base. You are understanding the mechanism. No, these two mechanisms you understood. Let me make you understand this mechanism. CO3 minus 2. So already it is negatively charged. So it has got the capacity to accept H plus. Right or wrong? So it will become HCO3 minus একটা plus আর minus 2 তে minus হয়ে গেছে, and OH obviously H2O থেকে যদি भाई H2O से आप एक टू H plus ले लिया तो OH minus ही रहेगा एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके. Yes or no? तो इसीलिए OH माइनस आयन निकला है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और HCl में H प्लस रिलीज हुआ है, NH3 ने एक्सेप्ट किया है. ये दोनों समझ में आने से ये भी समझ में आ जाता है. लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग वा चीज है. क्या इंटरेस्टिंग चीज है? जो पहले ब्रॉन्स्टेड रिएक्शन के इस पार में, सुनो दिमाग लगा के सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी चीज का. जो रिएक्शन के इस साइड में ब्रॉन्स्टेड एसिड है, वो उसी का एंटिटी इस साइड में बन जाता है ब्रॉन्स्टेड. वेट, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो ब्रॉन्स्टेड बेस का डेफिनेशन क्या है? H plus. हाँ, तो इससे क्या निकला है? Cl माइनस निकला है ना, तो ये बन गया है ब्रॉन्स्टेड बेस Bb. और ये क्या था ब्रॉन्स्टेड बेस? ये अभी बन गया है ब्रॉन्स्टेड एसिड. विश्वास नहीं हो रहा है? मैं बताता हूं. HCl है प्लस H2O है, क्या दे रहा है? H3O प्लस Cl minus. Right? So you know that H is H plus and Cl minus, and this H plus is received by H2O. So this becomes a Bronsted acid and this becomes a Bronsted base. Yes or no? Now ये ब्रेक करने के बाद जो एंटिटी पैदा हुआ है, अब ये भूल जाओ. इसमें देखो, इसमें H प्लस किसके पास है? इसके पास H प्लस है, तो रिलीज ये ही कर सकेगा. सो दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस. अब एक चीज देखो, जिस एंटिटी से ये निकला है एक्चुअली ब्रॉन्स्टेड एसिड से निकल के ब्रॉन्स्टेड बेस बन चुका है, और ब्रॉन्स्टेड बेस से ब्रॉन्स्टेड एसिड बना है. तो इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर 1. ये इन दोनों को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसेस. दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द ब्रॉन्स्टेड. मैं ये चीज दिखाता हूं, ये वाले रिएक्शंस देखो. इसमें देखो HCl, इसमें देखो HCl reacting with H2O. HCl is reacting with H2O. When HCl is reacting with H2O, it is giving H3O plus Cl minus. So देखो, इसको बेस 1 लिखा है और इसको एसिड 1 लिखा है. मतलब एसिड 1 एंड बेस 1 ये दोनों कॉन्जुगेट, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? मतलब कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है. इधर देखो, H2O ने CO3 माइनस 2 के साथ रिएक्ट किया है. कौन अभी यहां पे कौन दे रहा है? H2O दे रहा है H प्लस, CO3 रिसीव कर रहा है. वो प्रोडक्ट देख के ही पता चलता है. तो जो रिसीव कर रहा है वो क्या है? बेस है. जो दे रहा है वो क्या है? तो ये एसिड है. इस देने के बाद इसका क्या फॉर्म हुआ है? OH माइनस फॉर्म हुआ है. तो इस एसिड का क्या फॉर्म हो गया? बेस फॉर्म हो गया. नाउ इस साइड से अगर रिएक्शन को देखोगे तो ये this is the capacity to release the H plus. This becomes the Bronsted acid, this becomes the Bronsted base. So Bronsted acid से बना है बेस और conjugate base, और Bronsted base से बना है conjugate acid. जस्ट उल्टा सोचना पड़ेगा. रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा. रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तभी पता चल जाएगा. जैसे H2O का लिखने बोला है. H2O, अच्छा राइट 4 स्पेसीज, अच्छा नहीं रुको, HF का
HF क्या हो सकता है? HF will release H plus ion, so it is a what? Acid. Bronsted acid. तो H plus और क्या रिलीज करेगा? F minus, right or wrong? तो this will become a Bronsted base, conjugate base. समझ में आया? As easy as that. तो H2SO4 में तो क्या होता है? H2H plus, सोचो H plus HSO4 minus, ठीक है? तो H2SO4 में रिलीज किया, ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड एसिड. तो ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस, या सॉरी कॉन्जुगेट बेस. समझ में आया? इज दिस अंडरस्टूड? यहां पे क्या बोला है? राइट 4 स्पीसीज विच एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस. H2O NH3 HCO3 माइनस HSO4 माइनस. क्योंकि देखो H2O H3O प्लस H प्लस को रिसीव भी कर सकता है, H प्लस को छोड़ भी सकता है. अगर रिसीव करेगा तो H3O प्लस फॉर्म करेगा. याद है क्या बोला था? अगर H प्लस को रिसीव करेगा तो H3O प्लस फॉर्म करेगा, तब वो एज अ क्या एक्ट कर रहा है? ब्रॉन्स्टेड बेस. और अगर H प्लस HOH ये H को छोड़ के चला जाएगा और OH माइनस फॉर्म कराएगा तो इट एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. NH3 एक ऐसा हो सकता है कि NH3 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, NH3 दिया है ना उधर, NH3 का. अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस समझ में आया ना? Yes. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द एम्फीप्रोटिक वंस व्हिच कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेसिस. समझा? नहीं समझा? NH यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन. तो H प्लस को रिसीव कर पाएगा कि नहीं? कर पाएगा ना? कर पाएगा ना H प्लस को रिसीव. तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस बना कि नहीं? हाँ. लेकिन उसी NH3 को सोचो ऐसे, NHHH ऐसा भी तो हो सकता है. इसको छोड़ दे H प्लस को, तो NH2 माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रह जाएगा. ये सुनो, आ रहा है समझ में बात? हाँ, तो यहीं पे रह जाएगा. तो ये क्या बनेगा? Acid. हाँ, एसिड रिलीज. तो दिस अंडरस्टूड. So I hope that you have understood this. You can see the next two examples also. HCO3 H2CO3 भी फॉर्म सकता है, कर सकता है, और CO3 माइनस 2 भी फॉर्म कर सकता है. अगर CO3 माइनस 2 में जाएगा तो इट विल बिकम अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. अगर H2CO3 रिसीव कर लेगा H प्लस को तो वो बेस बन जाएगा. सेम इज द केस ऑफ HSO4 माइनस. तो ये 4 याद रख सकोगे? समझ में आया? Bronsted concept of acids and bases. How is it better than Arrhenius concept? So it explains the formation of H3O plus and H2. It explains those who don't have H plus initially or OH minus, they can also be, if they are showing acidic and basic character, they can also be sorted out. Bronsted-Lowry concept is not limited to molecules but included even in the ionic species. Ionic species को भी as an acid and a base treat कर सकता है, जैसे HSO4 minus, HCO3 minus. आया बात समझ में? Yes or no? Are you understanding or not? Yes. Okay, and it can explain the basic character of substances like Na2CO3, NH3 obviously. Na2CO3, NH3 এরা তো আর OH minus ion release করে না according to Arrhenius. But still with this Bronsted concept you could explain their basic character because they are receivers of H plus ion. And it can explain the acid base reactions of non-aqueous, মানে NH3 plus HCl যেটা Arrhenius করতে পারে নাই. Arrhenius couldn't explain NH3 plus HCl and H4Cl কিভাবে ফর্ম হচ্ছে because OH minus and H minus is not forming. But still it could be explained. That why? Because NH3 becomes the base, HCl becomes the acid, neutralization reaction H4Cl. Clear? NH4Cl is an acid salt or a basic salt? NH4Cl. Basic. Acidic. With a strong acid, weak base. HCl is a strong acid, it's a weak So base. NH3 is basic, no? Understood? Huh?
Is this understood absolutely? Then there is Lewis concept. Now Lewis concept is the most broadest concept, but on the other hand is also very simple. Is the क्योंकि देखो इसका limitations है. It cannot explain the reactions of CO2, SO2, SO3, okay, etc. and the basic oxide CaO, BaO, MgO. Substances like BF3, AlCl3 do not have any hydrogen and hence cannot give a proton, but still they act as acid. BF3 and AlCl3 acts as acids, but still they don't have any hydrogen to donate. According to Bronsted or according to RNS, they have to donate H+. They cannot. They don't have, but still they are regarded as acid. Then Lewis came that hydrogen hatao. The concept is an acid. So we were learning Lewis acid and base. Okay. Or Lewis concept of acid and base. I'll just take 1 minute ka short break. Just hold on. কথা বলতে বলতে মিউট করা যায় না? হ্যাঁ 10:30 পৌনে 11টা থাপ্পড় পেয়েছে জিম বের করে দিয়েছে জিমটি ভিতরে নিয়ে ঘুরিস নাকি রে? বিয়ে হবে না প্রিয়াঙ্গনা বলে তোকে থাপ্পড় মারছে সামনে বসা যাবে না পরে থেকে ভুলেই গেছিলাম আমি সামনে বসা যাবে না তোমাকে পাগলা বলতেছিস বলতেছিস এর আগেও তো মারছিলা আমি কিছু করি নাই ওর জন্য আমি সামনে বসেছিল আর দিয়ে দিলাম এটা এখন পড়াবা হ্যাঁ এটা পড়াবা हाँ लुईस एसिड एंड लुईस बेस थैंक यू तो इस देख लुईस एसिड according to Lewis concept an acid is the one which accepts a lone pair of electron. A base is the one which donates a lone pair of electron. এটা না অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় কি this is going with the Bronsted-Lowry concept only. Why I'll tell you. Bronsted-Lowry তে কে অ্যাসিড जे H प्लस छाड़े तो जे जार H प्लस छोड़ने का जिसका क्षमता है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का भी क्षमता है सोच के देखो और जो बेस है जो जिसको डोनेट लोन पेयर डोनेट करने का क्षमता है उसको H प्लस मतलब लोन पेयर डोनेट कर सकता है इसका मतलब लोन पेयर है उसके पास और उस लोन पेयर की वजह से वो H प्लस को रिसीव भी कर सकेगा. What did Bronsted say? A base is the one which receives H plus. What did Lewis say? A base is the one which donates lone pair. मतलब according to Lewis एक ऐसा एंटिटी जिसके पास लोन पेयर है जो डोनेट करने लायक लोन पेयर इसके पास है तो वो एक लुईस बेस है. तो डोंट यू थिंक कि डोनेट लायक करने लायक लोन पेयर है तो वो H प्लस को रिसीव कर सकेगा? राइट और रॉन्ग? तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस इज गोइंग हैंड इन हैंड. और तुमको लगता है कि एक्सेप्ट जो बंदा जैसे एसिड जो बंदा एज एन एसिड एक्ट करता है HCl या कोई भी ठीक है तो वो अगर H प्लस छोड़ सकता है तो उसके पास डर्थ है H प्लस क्रिएट कर सकता है तो वो H प्लस के वजह से लोन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकेगा. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला समझ में आया? डेफिनेटली आया होगा. अच्छा तो फिर भी हम लोग लोन पेयर के हिसाब से ही चलते हैं. मैंने जस्ट एक लिंक करके बताया तुम लोगों को. जैसे फॉर एग्जांपल ये ना रिएक्शन के हिसाब से सीखते हैं. देखो BF3. अच्छा बॉन्डिंग सिखाते वक्त मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखाया था? क्या क्या छोड़ा था? ठीक है सिखा दूंगा. कुछ भी नहीं है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में. क्लास 10 में बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर सीखा था ना वही है.
इसका यहाँ पे जस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना होता है, बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, दो दो करके, ठीक है, सिखा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अपने बुक से समझा रहा हूँ। इधर देखो, इधर देखो BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और BF3 यहाँ पे ना BF3 डेफिशिएंट है। तुम लोग अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मेरा ही गलती है, मैंने नहीं सिखाया है, मैंने अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखा लिया होता था, ठीक है, तो शायद ये अभी बताने में उतना डिफिकल्टी नहीं होता था, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखा के ही आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा बॉन्डिंग का कर लेंगे, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर छूट गया था, मैं सिखा दूंगा, कुछ भी नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अगर ड्रॉ करोगे, कुछ सब्सटेंस में देखा जाता है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या वैकेंट जगह है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इनकम्प्लीट हो जाता है बेचारा, जैसे BF3। तुमको लगता है ना कि कंप्लीट बॉन्डिंग जैसे क्लास 10 में सिखा है, वैसा नहीं होता है, बेचारा ना इनकम्प्लीट रह जाता है कभी कभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब इनकम्प्लीट रह जाता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का क्षमता होता है, तो वो एसिड बन जाता है, और जो डोनेट करने की क्षमता होता है जिसमें वो बेस बन जाता है, जैसे यहाँ